Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Shrali Sadri wa Yassir li Amri Wahlul Uqdatam min Lisani Yafqahu Qawli. This is Fayaz Faisal from the commentary box, and you are watching Memon Community Cricket League MCCL Season 1, which is presented by HH Impacts and powered by Jamnagar Vivaria Memon Jamaat and Youth Organization. The match today is being played between TN and Upleta Titans and the Cutchi Memon Champs. We are live from Rashid Latif Cricket Academy RLCA, and you can watch these matches of Memon Community Cricket League Season 1 live on the YouTube channel of Jamnagar Vivaria Memon Jamaat and Youth Organization YouTube channel, and on the YouTube channel of TNVision as well. The TN and Upleta Titans, they have won the toss and elected to field first. The match is going on right now. Well, it's the end of the very first over, and that was a nightmare for Kutchi Memon Champs because the first wicket already down in the very first over, two for the loss of one wicket. So Waqas Tara, he's going to bowl the second over. The first over was really a nightmare for Kutchi Memon Champs with just two on the board with the loss of one wicket. Haziq Sachwani and Rehan Karim bowling it. They're on batting right now. Okay, so that's up in the air, taken, gone. That's a Coton ball. Haziq Sachwani. Oh my. He departed. Waqas Tara got the breakthrough here. Just one he has scored. Just look at that. He made it look so easy, Waqas Tara. Well, it was an easy one as well. That's some magnificent bowling and some magnificent field by Waqas Tara himself. So Haziq Sachwani, he played two deliveries and scored a one. Abdullah Yaqub, the new man in, and he's facing it as well.
1.3 overs already delivered. 2 for the loss of 2 wickets. Here we go once again. Nicely bowled there. That was a little far from the off stump. Well, the batsman was totally unable to play it. Well, some great variations. That wasn't a little turn there. It was a slower delivery. That was magnificent here by Waqas Tara. He hasn't conceded any run in the 4 deliveries he has delivered, taking a wicket as well. Oh my, that was a little blunder by the keeper there. That's a single. So finally, a run of Waqas Tara's over. 3 for the loss of 2 wickets after 1.5. One more delivery remaining now. That will end the second. Cutchi Memon champs struggling a little today. Well, Rehan Karim, he's the batsman who can do it because he's the left-hander. And that's been given as a wide. The umpire said, my boy, you have to re-bowl it. For the loss of 2 wickets. Now last delivery to go once again. Rehan Karim played 2 deliveries. Just a single he has scored. Here we go. Slower delivery once again. That was onto the pads, but there wasn't any decision made by the umpire. It was surely a not out because all the stumps were exposed here. All the 3 stumps. Well, it was really... So that's the end of the second. 4 for the loss of 2 wickets. Here we go. Oh, up in the air once again. Well, it was a chance. It was a real chance to the bowler, Ajmal Siddiq. He has taken a wicket as well. In his 1.1 over, he has conceded just 2 for the loss of 2 wickets after 2.1. So Abdullah Yaqub now. He has played 5 deliveries, just scored a single in it. Here we go. That was magnificently played towards the point and well fielded in the end as well. So he has played half a dozen deliveries. Abdullah Yaqub scored just 2 in it. So struggle continues for Cutchi Memon champs here. Not a very great day and not a very great executed power play, I would say. It's still just 5 for the loss of 2 wickets after 2.2. Ajmal Siddiq once again. But he was trying to hit that, but it just hits the inner part of the bat. Well, that wasn't middled. Well, if it would have been middled, that would have been a nice shot there. Just a single. 6 for the loss of 2 wickets after 2.3. Well, 3 more deliveries remaining. Going with the current run rate of 2.40, which is quite low. Little misfield and took a run there. Well, Cutchi Memon champs are going with a very slow pace today. They are not just putting on some efforts here. And
Very good bowling by Tien and Upleta. They are not giving any chance and they are not giving any room to the batsman. They're just bowling it wicket to wicket, which is really a nightmare for the batsman. Ajmal once again, he'll bowl it. While Rehan Kareem is facing the left-hander. And dropped! Chance it was. The third wicket would have been down for Cutchi Memon champs. But that was a little blunder here in the field. Well, I can say it's really cold in Karachi, but today it is a little mild. And that's a very good weather for playing cricket today. Because in very cold weather, your hands become really sore when you catch the ball. But today it will be a little mild and it will be very pleasant for every single player. Towards the point. Oh, that was a chance for a direct hit here. The batsman was safely in. So that's the end of the third. 8 for the loss of 2 wickets. Bowled him! Gone! That was a catch drop. Rehan Kareem got a chance there and now bowled. Wakastara, you beauty. What a game. Just look at the precise delivery he has delivered. Onto the middle stump. That's the third one down. Rehan Kareem departs, played half a dozen deliveries, just 3 scored in it. So Ikrama Yaqub, the new man in. Once again a left-hander on the go. That was a little nick of the bat, went towards the third man. Fielder at the deep. Very well fielded in the end. Well, he threw the ball. Well, he lost some balance there as well. So balance is the key here, or else he would have got some injuries there. Just a single. 9 for the loss of 3 wickets after 3.2.
So dot delivery here, 9 for the loss of 3 wickets. Well, the struggle still continues for Cutchi Memon Champs. The power play should be really beneficial here. Not even 10 runs scored, and already it's 3.3 overs. Here we go. That was quite nicely struck there. So finally, that's a boundary. That was magnificently striked. That was from the bat of Abdullah Yaqub. Just look at the way he played it. Very strong with the bat here. So boundary. Score finally races to 13 with the current run rate of 3.55. Still it's really low, so there is a little lacking of boundaries. The need to little tighten up on boundaries here. 2 more deliveries to go. Well, he was going towards the point once again, but that was a little too short for the batsman. Well, he went really far to play it. Dot delivery it will be. Abdullah Yaqub played almost a dozen deliveries, just 7 scored in it. Towards the covers. Okay, that's a misfield. You have to be quite precise with the field here, because you have placed the field very intelligently, and when you lose the control over the field, that will be a little expensive here. So okay, end of the 4th, 14 for the loss of 3 wickets. That was a very close call here. Ajmal Siddiq once again bowling it. In his 2.1 overs, he has just conceded 9 and taken a couple of wickets as well. Okay, well, he's conceded 6 here and taken a wicket as well. So 14 for the loss of 3 wickets. Here we go. Nicely delivered. That was towards the off stump. Well, that would have been a little nightmare for the batsman if he hadn't played it. Well, he played it towards the bowler right away. Here we go, 14 for the loss of 3 wickets. Towards the covers. Fielder there placed. Dot delivery. Won't get any run here. Well, the pace of the game is a little slow here by Cutchi Memon Champs. They're not getting the confidence, and confidence is the key where you get some boundaries. Well, I think today the pitch is not responding in favor of the batsman. Well, they're getting a little puzzled here. Here we go. Well, this time towards the leg side off stump. Good variations. Well, he knows he has to deliver 6 deliveries differently. Couldn't be really predictable here. It's 2 more deliveries to go here. That was struck nicely.
This time towards the mid-off. And a little slow in the field here. To take in a single. Still the struggle continues. They are not getting the momentum, which is much required here. 15 for the loss of 3 wickets after 4.5. One more delivery to go. Well, 1.1 overs more to go to end the power play, and still just 15. Well, TN and Upleta, they have made it into the power play today. Made the power play into the favor. TN and Upleta. So that's the end of the 5th. That's the end of the 5th. 16 for the loss of 3 wickets. Okay, so played it down the ground towards the long off this time. Just a single on the board. $17 for the loss of 3 wickets. Okay, nicely played towards the deep point there. That was a fielder. It's very intelligent fielding being placed here. Okay, so that's the really last over going on. That will end the power play. So 18 for the loss of 3 wickets. 5.3 overs already delivered. And I can see the projected score, which is AI generated. That is 65 on my screen with the current run rate of 3.27. Well, a run rate of 3.27 is not really nice. Well, some lucky shot here. Well, he was going for a block, just the nick of the bat. Went towards the fine leg. Just look at it. Very lucky. That's a boundary. 4 more added to the total, and finally some boundaries here. Score now races up to 22 for the loss of 3 wickets after 5.4. Vikrama getting into the position. He's a little outside the crease here and played it towards the extra cover region. Well, there was a fielder. Just taking singles here. Well, I would say it's a very good strategy when you lose early on wickets and then you take singles and doubles. Getting set on the crease. Going with some strong feet. 23 for the loss of 3 wickets. Okay, that's striked and boundary. Just look at the replay. Mid-wicket boundary. And well executed. Well, he was very confident with that shot. 4 more. And finishing off the over in a style. That's the end of the power play. 27 for the loss of 3 wickets.
Okay, so now power play is ended. Well, power play was in much favor and much beneficial for TN and Upleta Titans. Well, Kutchi Memon champs. They were not. I can say that they are struggling because 28, just 28 on the board. Well, they need to tighten up now. They need to go aggressive hits. Aggressive hits are much required here. Now it's Abdullah Yaqub. 18 deliveries he has played. 15 he has scored in it. Current run rate 4.54. Flighted and straight down the ground. Well fielded in the end. Okay, that's a risky one. Directly onto the hands. Now, he was in much pain. Just look at that. Oh, that was hit very hard on his hand. .30 for the loss of 3 wickets after 6.2. Well, I can just predict that it will be a little low scoring. Sweet sweep, yeah. Went towards the fine leg. The outfield is a little slow, but ran for a couple of runs. What did the keeper do? Just a single. And that's been given as a wide as well. .36 on the board. 36 for 3. 2 more deliveries to go. Yeah, Ikrama Yaqub. Well, he has played 8 deliveries, 8 scored. The left-hander. Well, a deadly combo, and it becomes really hard for the bowler to judge the deliveries. Okay, boundary. Well played. That was towards the extra cover. Well, it went very deep. There was a fielder there. You can see in the replay. But he was a little short, some inches away. And that went for a boundary. .40 for 3. Just one more delivery to go. That will end the 7th. Slower flighted. And similar was the result. Played it really nicely. So that's the end of the 7th. 41 for the loss of 3 wickets.
So we are into the 8th over. Tala Shabir, the captain, bowling himself. He's bowling the 8th one now. Well, they are not giving any room to the batsman. And the struggle still continues with the bright pink gloves he's wearing. Oh, Messfield. Very costly and very expensive Messfield. Boundary. Tala Shabir won't be happy with that. But it was nicely swept there. Just look at that. Abdullah Yaqub now on 25 and 22 deliveries. Okay, here we go. Well, the batsman was safely, and that was a very chance. And that was quite strong throw by Tala Shabir as well. Just look at that. Just went to the fielder. Okay. That was a little short of the crease, but safely in. When you have the luck with you, you can go for some boundaries as well. Okay, that's a boundary. Well, fielder was a little short. Well, I can expect if he would have dived for it. So he would have just saved a few runs for his team. Yeah. Just look at that. He became a little slow. He just broke the pace. So 50 up for Kutchi Memon champs. 50 for 3 after 7.4. Current run rate of 6.52. Abdullah Yaqub now on 29 and 2 dozen deliveries he has played. And the game is a little slow by Abdullah Yaqub here. Now the projected score I can see on my screen is 130. Oh, just look at the turn there. That turned almost 2 feet. Tala Shabir. Just look at that. That became a difficulty for the batsman here. Flighted once again this time. That's just lofted. Chance it was. That's a history by TN and Upleta in this tournament that they were not very perfect with the catches. They used to drop the catches and they dropped the catches in the last game as well. Now in this game still the streak continues. Catches are being dropped. Well, it wasn't a very difficult one, but it was just an average catch which would have been taken. So that's the end of the 8th. 52 for the loss of 3 wickets. Samim Tiastara, the new bowler. Well, it was a slow one and
It was played really late. Not well timed, or else he would have got a boundary here. Well, Sami, he has played 16 matches, 16 innings, and 14 wickets in his hand. And he's playing his 17th match today. 53 for the loss of 3 wickets after 8.1. Abdullah Yaqub on 31 now in 26. Here we go. Nicely delivered there. That was a little far from the offside off stump. And that was not giving the batsman a little room. Just look at it. And a very good range to deliver it, but well played here. Went towards the fine leg region with just a single there on the board. Now that's a couple of runs, so 55 for the loss of 3 wickets after 8.3. Abdullah Yaqub now on 33. Well, TN and Upleta in their last match, which was played between TN and Upleta and Memon 11. Okay, I was going for some stats, but that's not the right time. That's a boundary for Abdullah Yaqub. He's building up the innings. He's ending the struggle, which was quite on the nerves of Kutchi Memon champs. But now 59 for the loss of 3 wickets. Well, I was saying in the match versus Memon 11, TN and Upleta were 10 runs short. And that was only because of the catches they have dropped and the fielding mistakes. And still, today we can see the similar mistakes being done here. 59. Okay, 60 now. One more delivery to go. And it was a very good over by Sami. 60 for 3. Here we go. Good one there. So dot it is. That's the end of the 9th. 60 for the loss of 3 wickets.
Okay, so we are into the 10th over. You are watching Memon Community Cricket League Season 1, which is presented by HH Impex, and we thank Mr. Abdul Qadir Barambia. It's only because of him that this league is running so smoothly, and it's powered by Jamnagar Vivaria, Memon Jamaat and Youth Organization. Well, it's a very dedicated team behind this tournament, especially the media team, Imran Hussain and Hashim Irfan. They both are behind all the media, and you can see the graphics. My God, such beautiful, yeah. And I'd like to thank Mr. Arif Patel as well. He designed our logo for MCCL Season 1, and that is such an impressive logo he have designed, Arif Patel. Thank you so much, bro. And our ground team, the on-ground running team, that's I can say that these people are the backbone for MCCL Season 1, especially our chairman Sanan Ilyas, and then Anas Majid, Safwan Samad, Anaf Darwish, Raza Imran, Hassan Munawar, Faik Imran. Thanks to these little guys. So that was a four while I was introducing my team here. Special thanks to our broadcasters. Nabil Bhai is sitting beside me, and he must be really fed up of me because I have been just chanting and just talking a lot. So that was a chance, that was a special one, yeah, but not really beneficial. So 9.4 overs already delivered, 67 for the loss of 3 wickets. You're watching MCCL, Memon Community Cricket League Season 1. We are live from Rashid Latif Cricket Academy. Here we go. Towards the point. And oh, cool, good sprint here, but the batsman just lost the balance. And well, he maintained it nicely. Very good one here. Because injuries in such cold, my God, such painful. 69 up, 69 for 3 after 9.5. One more delivery to go, and that will end the half of the innings. Tala Shabir bowling it, and that's a little slight change in the field as well. So here we go. Well, it was delivered towards the leg side off stump, and nicely played it towards the fine leg region. So that's the end of the 10th. 70 for the loss of 3 wickets. Into the 11th over, Samitara bowling it. Okay, that's in the air and taken this time. Sami strikes. Ikrama Yaqub, after scoring 19, departs.
So Ikrama Yaqub, he has played 17 deliveries, 19 and then departed. That was Sami Thara, the man. Gave a breakthrough. So 70 for the loss of 4 wickets after 10.1. Hanzala, the new man in, and he was the man of the match for the last game played by Cutchi Memon champs, and I can say that he's the key batsman today. And well, I'm hoping for a great game by him. 70 for the loss of 4 wickets. 4 wickets already down. Sami Thara on the go. Well, he's turning the ball a lot today. And he's getting the turn. Okay, so Sami bowling it. Well, it was played towards the point. Okay, misfield once again. These misfields will be very costly in the end because when you are playing some professional cricket, well, there is not any excuses that the ball was a little wet and there was some issues. Nah, there are no excuses. You have to take every single catch. You have to take every single field seriously. And this is how international level players are made. Just like you can see some tape ball players like Haris Rauf, they were picked up just because of their consistency in field and in the ball. And today they have become stars. And surely we will get some stars from the Memon community as well. And this is why MCCL Memon Community Cricket League is going on in such a smooth pace. And thanks to Mr. Abdul Qadir Barambia, the ruler of HH Impex, it's only because of him that this tournament is running so smoothly. Start delivery once again. Now last delivery to go, 73 for the loss of 4 wickets. Towards the backward point this time, but there was a fielder. So that's the end of the 11th, 73 for the loss of 4 wickets. Tala Shabir brought back to bowl, yeah? Well, he has brought himself back to bowl because he's the captain. So a dot delivery. Well, he's bowling his third over. 21 he has conceded. Well, he got a good turn here in the ball. Pitch is responding in favor of spinners today. The fast bowlers are being hit. But still the struggle continues for Cutchi Memon champs. There is still a lacking of boundaries. Boundaries are
utterly needed, or else it'll just jeopardize the batting side for Cutchi Memon champs. Nicely fielded there, very nicely fielded there. Well, it was not really easy for the fielder to maintain the balance. He rolled 2 times and maintained the balance there. Didn't touch his feet with the boundary rope. Very good effort. That was quite nicely played, but this time, that's bad. That's really bad. That's really bad. That hit our cameras as well. That misfield was very costly. If it would have just damaged our cameras, that would have been a loss of almost 2.5 or 3 lakhs. My God. Nabil bhai, you have to be really calm in this matter. Okay, so 79 for the loss of 4 wickets. Last delivery to go. That's just a dot now. So that's the end of the 12th. 79 for the loss of 4 wickets. So that was very nice. Oh, it was just near the leg side off stump. Just few centimeters away. So 50 up for Abdullah Yaqub. That was such appreciation by the duckout as well. 1540 deliveries, Abdullah Yaqub. End of the 13th, 85 for 4.
into the 14th. Sami Aslam bowling it. Singles on the go. Still the projected score. It's now not decreasing. Now it's not increasing. It's stuck on 130. So 88 for the loss of 4 wickets. 13.3 already delivered. 3 more deliveries to go. Abdullah Yaqub now on 51. Well, he has built his innings and he has played from the front end. Okay, that's nicely swept. But it wasn't enough to go and reach the boundary. So, single once again. 89 now. 89 for the loss of 4 wickets after 13.4. That was a very costly drop because it was Hanzala. And Hanzala was the man of the match in the last game. Just you can see it. Well, these opportunities are very rare. And it was an easy catch comparatively. Very lucky Hanzala here. Cutchi Memon champs now on 90 for the loss of 4 wickets. 13.5 already delivered. One more delivery to go. And towards the fine leg. And taking a couple of runs. 92 for the loss of 4 wickets after 14. Oh, that was quite nicely striked, and we have to check the umpire's decision. Okay, that's a 6. Well, the fielder was there. It went over the head of the fielder and found the fences there. Completely nailed it. That's a 6. Samitara being expensive now. In his 3.1, 23 he has conceded, taken a wicket as well. Okay, that's up in the air. Landed in the no man's land. There wasn't any fielder. Very lucky here. Abdullah Yaqub.
Okay, so 100 up, 100 for 4 after 15. That was an appeal, but so dot delivery Sami Aslam. He's bowling it. 100 already up for Kutchi Memon Champs. Nicely swept. Very nicely swept. Fielder there. And just a single on the board. And now Hansala gonna face it. Well, today Hansala is struggling a little. He's not in that mood. But he is a player who fires up the ball now once again. That was lofted. Taken. Taken at the deep. Hansala departs. A big wicket down, a big loss to Kutchi Memon Champs. Fifth one down, 101 for the loss of 5 wickets. Hansala struggled today. 19 in 19 he has scored, and now he departed. Up in the air and taken! Shahnawaz! Shahnawaz! Gone on a golden duck! Very first delivery he has played. Lofted away and a very, very safe catch here. A big loss to Kutchi Memon Champs once again. Sixth one down on 101. Struggle still continues. Shahnawaz departs 101 for the loss of 6 wickets.
Sami Aslam now. He gave a great breakthrough to his team. 2 wickets he has conceded in this over. Well delivered. Current run rate of 6.83. (101) for the loss of 6 wickets after 16. 4 more overs to go now. Ajmal Siddiq. He's bowling the 17th now. Dot delivery. 101 now. Abdullah Yaqub and Najib both are on the crease. Well, Abdullah Yaqub, he is on 56 now. I won't say that he's playing bad today because he's keeping the wicket in the hand. Okay, chance and gone, taken. Well, I was just applauding and praising this player, and he gave the catch on the very next ball. 7th one down. Completely jeopardized the batting lineup of Cutchi Memon champs. TN and Upleta on the top right now. 101 for the loss of 7. A big wicket down. Abdullah Yaqub departs on 56. Ayan, the new man in. And you can see stats as well. He's playing his 4th match today. Just 3 matches he has played, Ayan. Well, both the unset batsmen are on crease now. That will be a little problematic in the tail overs. Here we go. Very nicely delivered here by Ajmal. That shows the experience Ajmal has. He's bowling the last over of his spell, and it was a tremendous spell by Ajmal today. In his 3.3, he has just conceded 9 and taken 2 wickets as well.
Oh my. Once again, that was a little blunder by the keeper. And that costed a run of buys. Signaled by the umpire. Our umpires, Mr. Mateen Sheikh and Mr. Asad. Both the big names of community and corporate cricket umpiring field. And yesterday, Mr. Mateen Sheikh was with me on OML T10, Okay Memon League. Just a single on the board. So now 103 for the loss of 7 after 16.5. One more delivery to go. That will end the 17th now. Ajmal Siddiq with a magnificent over. Got a wicket in it as well. And a big wicket. Here we go. Wasn't really nicely struck there, but just got a single. That's the end of the 17th. 104 for the loss of 7. Gone, another one down. While I was having the refreshing cup of tea, and that gave a refreshing cup of tea to TN and Upleta as well. So another wicket down. 8-1 down. 108 for 8 now. The struggle still continues for Kutchi Memon champs.
Okay, so we are into the 19th over, 109 for the loss of 8 wickets. The projected score is now 120. And now we'll shift a little to Urdu because there is a man of our working committee. He is behind MCCL. Anaf Darwesh is with me. अनफ से थोड़ी सी बात भी करेंगे ज़रूर, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम ही अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और ऑब्वियसली इनका काम भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए जिस तरीके से ग्राउंड में ऑन फील्ड रहते हैं। और फिर इसके बाद इतनी ठंड का मौसम, हम तो कमेंट्री बॉक्स में आ जाते हैं ज़रूर, लेकिन इस ठंड के मौसम में इतने अच्छे से काम करना। एनफ कैसे हैं आप? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। एनफ थोड़ी सी आपने लॉन्ग जवाब देने, अल्हम्दुलिल्लाह के ऊपर ही आपने टोटल नहीं करना। अच्छा जी, तो पहले तो ये सवाल मैं आपसे करूंगा कि एमसीसीएल सीजन 1 को आप किस तरीके से देखते हैं, और फिर इसके बाद मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि एक इंथुजियाज्म होता है जब आप दूसरे प्लेयर्स को देख रहे होते हैं और एक टूर्नामेंट को कवर कर रहे होते हैं, तो वो किस तरीके से आपके अंदर बिल्ट हुआ? बस जमात का कमाल है और हमारे घर वालों का कि हम लोग इस फील्ड में आ गए, और अल्हम्दुलिल्लाह से ये टूर्नामेंट भी हम अच्छे से करा रहे हैं, और बाकी इंशाल्लाह और ऐसे ऐसे कंटेंट आता रहेगा आपके पास सीज़न 2 तक इंशाल्लाह। वैसे जैसे मैंने बताया कि आज इतना ठंड का मौसम है, और जब एमसीसीएल स्टार्ट हुआ तो ऑब्वियसली ठंड भी स्टार्ट हो गई थी, तो आप उसको कैसे टैकल कर रहे हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं होता इतने ठंड के मौसम के अंदर इतनी ठंड को टैकल करके और इस तरीके से ऑन फीट रहना। माशाल्लाह से हमारे सफ़ान भाई हैं और सन्नान भाई हैं, भले उन्होंने पी की चाय हमें पिलाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से हमने ग्राउंड में रील्स का कंटेंट वगैरह वीडियो शूट सब अच्छे से किया, तो इनका शुक्रिया, इन्होंने हमें पी की चाय पिलाई। वैसे इन्होंने फीकी चाय के बारे में डिस्कस किया है, तो आप ज़्यादा चीनी वैसे भी ना लिया करें। तो ये फीकी चाय आपके लिए ज़्यादा करामत साबित होगी, क्योंकि ऑब्वियसली गर्म तो है ना। अच्छा जी, तो अगर चाय से हट के बात करें तो ग्राउंड के अंदर आप एमसीसीएल को अभी कैसे देख रहे हैं, और आगे आने वाले टूर्नामेंट्स के बारे में आपका क्या विजन है? मजाक की बातें तो होती रहेंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न में इस तरह देख रहा हूँ कि हम और ज़्यादा टीम्स को लाएंगे और ज़्यादा अपनी टीम बढ़ाएंगे, ताकि हम अच्छे से अच्छा शूट कर सकें और लोग हमसे और देखें कि कम्युनिटीज़ के अंदर मिलाव जुलाव अच्छा हो, लोगों की अनबन ज़्यादा होनी चाहिए ताकि इस इवेंट को और अच्छा, वैसे एक और बस लास्ट आपसे क्वेश्चन ये करूंगा कि आप लोग जिस तरीके से पूरे इवेंट को कवर कर रहे होते हैं, ये फोन्स के ऊपर भी आपके रिकॉर्डिंग हर वक्त ओपन नहीं रहती है, तो ये आप किस तरीके से कवर कर रहे हैं? क्या सेटअप आपने लगाया हुआ है, क्योंकि आपके साथ एक पूरी टीम भी मौजूद है, और किस तरीके से आप कवर कर रहे हैं, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताइएगा। हमारे जैसे कोच है जो सन्नान भाई हैं, जिन्होंने हमें मोबाइल वगैरह और हम कैमरा वगैरह से शूट वगैरह कर रहे हैं ताकि इस इवेंट को हम अच्छे से अच्छा दिखा सकें, तो इंशाल्लाह और भी अच्छा दिखाएंगे फ्यूचर में, तो हमारी कोशिश यही रहेगी। बस मैं थैंक यू सो मच दैट इट वाज एन ऑफ दरवेश। आपने देखा, बड़ा चुलबुला सा इंटरव्यू दिया इन्होंने, और इसी के साथ अब 19 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। 119, 8 विकेट के नुकसान पे। Okay, so now Wakas Thara back to the game and back to our language. So now last over. Wakas Thara, he has completed his 4 overs. The spell taken 2 wickets and 29 runs he has conceded. You are watching MCCL Season 1, Memon Community Cricket League, which is presented by HH Impex, Mr. Abdul Qadir Barambia, and powered by Jamnagar Vivaria Memon Jamaat and Youth Organization. 119. Well, it is a low scoring game today. Well, it's a very great season for playing cricket. Well, it's not much cold, but magnificent. So 119 for the loss of 8 wickets. Last over to go. Tala Shabir. He is gonna bowl the last over. And gone.
Tala Shabir. Another breakthrough. Just look at that. He was trying to lob that. And it was just hit onto his back foot. That will be very expensive. Najib departs. Well, 5 years played, 3 years scored. Ayan departed. It wasn't Najib. Well, he scored 8 in 8. So another wicket down. 9 down, 119 for the loss of 9 wickets. Tala Shabir on the go. Boundary there. That was very lucky. Saud, the batsman, striked it for a boundary, and that was towards the long off. 123 now, 123 for the loss of 9 wickets. Well, we are into the 9th. That was really onto the middle stump. Well, nicely striked. Defended it perfectly. Sprinted for the couple of runs. Saud was very quick. 125 now. Well, 125 is not that much difficult for TN and Upleta. They were 10 runs short in the last game they played against Memon 11. And that was a little mistake by TN and Upleta because they were dropping the catches. They were low with the field. Once again, wide and a 4. First it was a 4 of buys, and now the fifer. If we say in Urdu, Panja aa gaya ji. So now, that will be a little expensive for TN and Upleta. Well, they were tightening Kutchi Memon champs CMC from the beginning, but now just that one wicket has become the bone in the epiglottis for TN and Upleta. 130 already up. Bowled him! That's an all out. 130 all out. Cutchi Memon champs. They were not in the mood from the beginning. They were struggling from the beginning, but still managed to score 130. We'll be back with the second innings shortly. 131 is the target. TN and Upleta will bat on 131 in 20 overs. So you can see the batting scorecard. Rehan Karim with just 3. Oh, Shakil Khuraya today. He was the turning point, the game changer in the last game. Departed on a duck. Well, Haziq Sachwani, the captain, on single. Abdullah Yaqub was amazing with the bat today. 56 he has scored. Ikrama Yaqub with 19. Hanzala equally 19. Shahnawaz with a duck and Najib with 3. And now we'll move towards the bowling scorecard. Well, the 10 wickets are down today, and Ajmal Siddiq with his 4-over spell taken 2 wickets, just 11 runs. It was a magnificent spell by him with the economy of 2.75. Waqas Thara with 29 runs he has conceded. 2 wickets he has taken. Sami with 3 wickets. Sami was amazing with the ball today. Sami Thara with wicket, and Tala Shabir with 2 wickets and 34 runs. So 131 more required, 120 deliveries to go. We'll be back shortly with the second innings. Till then, stay tuned.
Okay, so Bismillah Rahman Rahim. We are back with the second innings. 131 is the target for TNN Upleta. Well, it was a very slow inning which was played by Cutchi Memon champs here. Well, they were all out in the very last over. Here we go with the first delivery and starts off with a wide. That's the second delivery with a wide. That's Sami Aslam and Moiz Aslam. Both the brothers are on the crease. Magnificent. So 6 without any loss after 2 deliveries. Well, the first delivery was illegal one, and then 2 wides, and then a boundary. Here we go. And that was nicely striked and just straight into the hands of the fielder. 3 more deliveries to go now. Sami, now he's going to face it. Hansala bowling it. Here we go. Okay, so white ball signaled by the umpire. Well, the combo of a left-hander and right-hander, that's always deadly for the bowlers. But now this combo will be deadliest because the score is not very high, 131 to win. Here we go. Okay, white ball once again. Well, I was a little early here. Umpire gave it after a second. So that's a wide. White ball signaled by the umpire. Well, it's not a very great day for Hansala today. Well, he didn't dominate it in the batting, and now he's delivering some wides. Here we go. Oh, nicely bowled there. No, that's a wide. Okay, that's a wide. Totally lost the control over the ball, Hansala. Little expensive.
and smacks it straight to the fielder. Risky run here, just a single. Nicely played. One more delivery to go. And nicely striked it towards the point. So that's the end of the first 10 without any loss. And now we'll little shift to Urdu because we have one guest today here as well. This is Fayaz Vessel from the commentary box. You'll be watching the ticker today, and I have the chairman of media committee Jamnagar Vivaria Memon Youth Organization, Mr. Imran Hussain, with me. And it's a little pleasure because you're watching all the animations and you're watching all the smooth graphics today in MCCL season 1. This is all because of him. He's the man behind him. Imran, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, बेहतरीन। इमरान, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि क्या ही खूबसूरत अंदाज से आपने अपनी टीम से ये काम करवाया है। जो ग्राफिक्स एनिमेशन हम देख रहे हैं और इसको बड़े अच्छे तरीके से बड़े स्मूथली लेके चले आप। हाँ, दरअसल हमें फुली मतलब कंफर्टेबल थे हम कि मतलब हमें हमारे प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी और स्पेशली स्पोर्ट्स कमेटी के चेयरमैन सनान इलियास, उन्होंने हमें फ्री हैंड दिया था कि आपने इस लीग को एक नेक्स्ट लेवल लेके जाना है। तो उसके लिए हमने ये था कि ग्राफिक्स हमें नेक्स्ट लेवल करनी थी। तो जो हमारे इन हाउस जितने भी लड़के थे तो हम इस पे थे कि हमें इन सब जो ग्राफिक्स इंटरनेशनली हम लीग्स पे देख रहे थे तो वो हमें इस MCCL में लेके आना था कि इसको एक हम ब्रांड बना सके। वैसे आप मीडिया कमेटी जामनगर रिवारिया मेमन यूथ ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं, तो ऑब्वियसली एक विजन के साथ आप आए होंगे। तो वो विजन मैं आज जानना चाहता हूँ कि मीडिया कमेटी को आप कैसे आगे लेके चलेंगे और क्या मज़े मज़े की चीज़ें हमें आगे देखने मिलेंगी। दरअसल हम बस ये कोशिश कर रहे हैं कि तमाम चीज़ें हम इन हाउस रखें और जितने हम इन हाउस चीज़ों को एनहांस कर सके हम उस चीज़ की तरफ फोकस कर रहे हैं। और हम इस साल मैं जैसे मैंने चेयरमैन की मतलब पोस्ट संभाली तो मेरा ये था कि मतलब जो भी हम चीज़ कर रहे हैं उसको ऐसे ब्रांडिंग लेके चले और चीज़ें ना रीब्रांड करें और तमाम ब्रांडिंग की तरफ लेके चले और तमाम हम जो भी चीज़ बना रहे हो वो इन हाउस हो और हमारे अपने लड़के उसको बनाते रहें। वैसे मैं आपको एक बार फिर MCCL की तरफ ही लेके आऊँगा। जब आपको MCCL की ये चीज़ें ऑफ़र हुई और जब आपको पता चला कि आपने MCCL के अंदर ये काम करना है, तो उस वक़्त आपके दिमाग में ऑब्वियसली कुछ आइडियाज़ होंगे और उस आइडियाज़ को ऑन पेपर लाना और फिर इसके बाद उसको एज़ ग्राफ़िक लाना, ये आसान नहीं होता। तो आप इसको किस तरीके से लेके आए और आपके कौन से टीम मेंबर्स ऐसे थे जिसके ऊपर आपने भरोसा किया? बेसिकली जब मेरे साथ डिस्कशन हुई थी MCCL की तो उस वक्त हमारा ये था कि हम अपने जितने भी लड़के हैं उनसे मशवरे करके और चीज़ें को ऑन पेपर इस तरह लेकर आए कि वो इंटरनेशनल लेवल पे जाए, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल को हम compete कर सके। तो सबसे पहले मैं मतलब जो पास्ट चेयरमैन और करंटली अभी वाइस प्रेसिडेंट भी है हमारी यूथ के आरिफ पटेल, और दूसरा सेकेंडली मेरे पास जो मेरे साथ एक मेंबर है हाशिम इरफान। इन दोनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि इन दोनों ने मतलब जो भी मेरी विज़न थी और जो भी उनके आइडियाज़ थे वो हम ऑन पेपर लेकर आए और इस चीज़ को हमने एनहांस किया कि हम तमाम चीज़ें है ना मतलब इंटरनेशनल लेवल और तमाम लीग्स को हम compete कर सकें। अच्छा, वैसे अब मैं ये भी आपसे एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगा क्योंकि सिर्फ यहाँ पर मीडिया और ग्राफिक्स के अंदर सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा,
लेकिन और भी आपके साथ पूरी टीम है जो कि इंटरव्यूज़ वगैरह भी हो रहे हैं यहाँ पर, बैक टू बैक रील्स भी यहाँ पर बनाई जा रही हैं। तो ऑब्वियसली ये एक मीडिया चेयरमैन का ही विजन हो सकता है, क्योंकि इसको सिर्फ ग्राउंड्स में लाइव की हद तक कवर नहीं करना, बल्कि इसे पेज के ऊपर सोशल मीडिया पे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के लिहाज से भी कवर करना है, तो उसको किस तरीके से लेके चले। और ऑब्वियसली मैंने टीम के नाम तो काफ़ी दफ़ा यहाँ पर अनाउंस किए ही हैं, तो उन लोगों को इस चीज़ में इंडल्ज करना, ये आपने कैसे किया? दरअसल हमारे पास जितने भी लड़के आते हैं वो अपने एक विजन के साथ आते हैं कि मतलब उनको कुछ ना कुछ कम्युनिटी के लिए करना होता है। तो बेसिकली उनको एक मतलब मोटिवेट करना और उनको एक फ्री हैंड देना। तो मैं जैसे मतलब मैं जैसे चेयरमैन हूँ या मतलब एमसीसीएल को मतलब हैंडल कर रहा हूँ इसकी सारी मीडिया। तो मुझे जितने भी मतलब हमारे पास लड़के हैं उनको मैंने फ्री हैंड दिया हुआ कि जो आपके पास कंटेंट आइडियाज़ है वो ऑन आप टेबल लेकर आए, हम उसको डिस्कस करते हैं और उसमें से जो बेस्ट हो सकेगा वो हम कम्युनिटी के लिए करेंगे और हमारी एमसीसीएल को प्रमोट करने के लिए करेंगे। और अब आखिरी क्वेश्चन कि इतने सर्द मौसम में ऑब्वियसली काम तो आपने कर दिया है, अब वो काम आपका शो भी हो रहा है और तमाम जगहों पे चल जरूर रहा है, लेकिन इसके बावजूद इतने सर्द मौसम में आप हर मैच में ऑन ग्राउंड ऑन फीट होते हैं। जी, ये तो है मतलब ये अपनी कमिटमेंट होती है कि हम कम्युनिटी के लिए क्या सर्विस कर सकें। तो वही बस बेसिकली ये है कि कम्युनिटी के लिए बेस्ट कर सके और तमाम लड़कों को साथ लेके चलते ताकि बेस्ट हो सके कम्युनिटी के लिए। क्योंकि एक कम्युनिटी सर्विस होती है जो कि आपको मतलब फाइनेंशियली तो मतलब इस तरह नहीं है बंदा वो होता है मतलब पर बाकी चीज़ों पे और नाम बनाने पे सारे काम होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ऐसे ही विजनरी लीडर्स हमारे होने चाहिए और ऐसे ही विजनरी लीडर्स के बाद ही कुछ प्रोग्रेस हो सकती है हमारी। सो दिस वाज द मीडिया कमेटी चेयरमैन ऑफ जामनगर विवारिया मेमन यूथ ऑर्गेनाइजेशन इमरान हुसैन, एंड वी वर फ्रॉम द कमेंट्री बॉक्स कैंप थैंक्स टू TN Vision, and we'll be back to the game now. Okay, thank you so much Nabil bhai for such a great setup here in the commentary box of MCCL Season 1. You were watching a little chit chat session here with the Media Committee Chairman. You're watching MCCL Season 1, which is presented by HH Impex, Mr. Abdul Qadir Barambia. He's the man behind him, and which is powered by Jamnagar Vivaria, Memon Jamaat and Youth Organization. Back to the game. TNN Upleta Titans now on 14 without any loss after 1.5. So one more delivery to go. 117 more needed and 109 deliveries now. Moiz Aslam, he's facing it, the right-hander. And on the other end, it's Sami Aslam. Okay, so taken the first wicket down. The early on wicket in the power play. Cutchi Memon champs will surely be very happy with it. That's the end of the second over as well. 14 for the loss of one wicket.
20. Gone! Gone! We are into the 5th over. Starting off the 5th over with a wicket. Sami Aslam departs. A big wicket down, big loss to TN Upleta Titans. 24 for the loss of 2 wickets. Okay, so now it was Sami Aslam. Played 11 and scored 10 in it. Okay, so now once again I'll shift to Urdu. तो एक बार फिर हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं कमेंट्री बॉक्स में. आज कमेंट्री बॉक्स स्कैम जो हमारा लगा हुआ है इसका खासा फ़ायदा उठाएंगे हम ज़रूर. और सबसे पहले तो MCCL सीजन 1 विच इज़ presented by HH Impacts Mr. Abdul Qadir Barhambia and powered by Jamnagar Vivaria Memon Jamaat and Youth Organization. मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और थैंक यू करना चाहूँगा हमारे जमात के प्रेसिडेंट जनाब यूसुफ रंगून वाला साहब को एंड दी ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी जनाब इमरान विवारिया साहब को कि उनकी बदौलत और उनकी ये मेहनत है, उनकी ये मेहनत यूथ पे रही. एंड देन दी प्रेसिडेंट ऑफ जामनगर विवारिया मेमन यूथ ऑर्गेनाइजेशन मिस्टर उज़ैर मुनव्वर, उनकी भी ये मेहनत रही कि आज MCCL सीजन 1 इतनी स्मूथ पेस के ऊपर चला. और आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो हैं द प्रेसिडेंट ऑफ जामनगर विवारिया मेमन यूथ ऑर्गेनाइजेशन मिस्टर उज़ैर मुनव्वर. उज़ैर भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इतने सर्द मौसम के अंदर MCCL जारी और आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं. वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. और ये MCCL सीज़न 1 है. इंशाल्लाह ताला अभी हमारी टीम जिस तरीके से काम कर रही है, तो हमारी टीम तो पहले ही थोड़ा, और हमारे जो प्रेसिडेंट्स वगैरह हैं, हमारे जमात के प्रेसिडेंट हैं यूसुफ भाई, इमरान विवारिया हैं जनरल सेक्रेटरी, हमारे मेरे यूथ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं बिलाल दादा भाई, वो लोग सब उत्साह थोड़ा सा अभी थोड़ा सा रेडी हैं वो लोग के सीज़न 2 लॉन्च करा दें. पर हम अभी इसके अंदर सिनेरियो चेक कर रहे हैं कि हमारे को और क्या क्या चीज़ें की कॉम्प्लिकेशंस हैं. उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला सीज़न 2 भी लॉन्च इसके एंड से पहले कर देंगे. और इसमें माशाल्लाह आपका भी बहुत बड़ा हाथ है, हमारे मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है. और मीडिया माशाल्लाह हमारी बहुत बेहतरीन चल रही है. अभी हमारा इंशाल्लाह ताला WSL का भी चल रहा है, तो इंशाल्लाह ताला वो भी 1 जनवरी तक हमारा है कि हम उसके अंदर हमारा WSL 12 लॉन्च कर दें हम लोग. और उसके लिए भी इमरान भाई है हमारे, वो फुल मेहनत में लगे हुए हैं कि बस उसका सारी चीज़ें तैयार कर रहे हैं. लोगों आज उन्होंने माशाल्लाह हमें तैयार करके दे दिया है. और इसी तरीके से वो MCCL के ही उस पर पार्ट पे चल रहे हैं कि MCCL जो है वो इसी तरीके से, जिस तरीके से MCCL के चल रही हैं चीज़ें, जैसे आप मीडिया में देख रहे हैं अभी, जैसे हमारे TNVision वाले भाई हैं, ये हमारे साथ अभी कनेक्ट हुए हैं सेकंड मैच के बाद. तो माशाल्लाह इनके जो फीचर्स हैं वो बहुत अलग है. तो ये है कि आगे देखते हैं इंशाल्लाह ताला क्या होता है. अच्छा जी, उज़ैर भाई, सबसे पहले तो बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ जामनगर विवारिया मेमन यूथ ऑर्गेनाइजेशन, किस विजन से आप यहाँ जामनगर विवारिया मेमन यूथ ऑर्गेनाइजेशन को लेके चले? क्योंकि ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जब आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे होते हैं एंड यू आर द लीडर फ्रॉम द फ्रंट एंड. आप बिल्कुल एक तरीके से देखा जाए तो चेस के अंदर जो किंग होता है
आप उस किंग की तरह काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो कॉम्प्लिकेशंस को आप किस तरीके से टैकल कर रहे हैं और आगे जामनगर विवारिया मेमन यूथ ऑर्गेनाइजेशन ना सिर्फ स्पोर्ट्स बल्कि आगे दूसरे जो फलाही काम हमारी जमात कर रही होती है, और फिर इसके बाद एजुकेशन के रिलेटेड हमारी जमात जो काम कर रही होती है। और मैंने देखा था रमज़ान में कुछ रोज़गार की स्कीम्स भी थी, तो थोड़ा सा उसको भी ब्रीफ कर दीजिएगा आप। अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे जो जामनगर व्यवहारिया मेमन जमात के सदर हैं ना, वो उनका बहुत बड़ा हाथ है हमारे को इन सब चीज़ों में पुश करने का। यूसुफ भाई ने हमें बहुत फेवर किया है, इमरान भाई ने हमें बहुत फेवर दी है, और जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं तो उसमें हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट्स हैं उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। 24 साल तकरीबन 24-25 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह यूथ में काम करते हुए। इसमें हमारे फैसल बाकी साहब हैं, वो हमें हाथ पकड़ के लेके आए थे, और हमें घर से उठाने का काम जो है वो इमरान विवारिया का और अब फैसल बाकी साहब का था। तो आज इस मकाम पर हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी पोजीशन दिलाई, और उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे एक्स प्रेसिडेंट्स का भी बहुत है कि वो आज भी हमारे साथ इसी तरीके से खड़े हुए हैं जैसे पहले हम उनके साथ खड़े होते थे वर्किंग में, आज वो हमारे साथ खड़े हुए हैं माशाल्लाह। इसमें अदनान भाई, सलमान भाई, इमरान सुलेमान, आसिफ मोहम्मद अली, और इसके अलावा जो है हारिस रंगून वाला, इसमें हारिस रंगून वाला का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जो हमारे अंदर अपग्रेडेशन हुई है, जो हम लोगों ने अपडेट्स हुए हम लोग, तो हमारी चीज़ में लाइव में चेंजिंग, हमारी जमात के प्रोग्राम्स में चेंजिंग, वो हारिस की वजह से आए। हारिस हो गया, उसके बाद अदनान सलमान है, उसके बाद फयाज़ भाई हैं, तो ये सब माशाल्लाह इन लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा ये अपडेट करा है, और उसके बाद हमने आज ये करा है, तो ये भी उन्हीं के हम साथ चल रहे हैं। उनसे पूछते हैं, हारिस भाई से पूछते हैं, अदनान भाई से पूछते हैं, सलमान से पूछते हैं, इसके अलावा हमारे आसिफ पटेल साहब हैं, उनसे हम बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, तो वो भी हमें बहुत सारा बताते हैं। WSL जिस तरीके से जिस लेवल पे हम लेके गए, या आपने देखा WSL हम किस लेवल पे लेके गए, तो वो लेवल जो है हमें आसिफ भाई ने सिखाया। सही, इसमें हमारा खुर्रम भाई का, समद डोचकी साहब का, खुर्रम अब्दुल रशीद और समद डोचकी साहब का भी बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने बहुत अब हमें इस नेक्स्ट लेवल तक, जो आप बोलते हो ना नेक्स्ट लेवल, तो ये आज नेक्स्ट लेवल जो है ना इन सब की बदौलत है। हम वैसे थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी, लेकिन WSL के 11 सीजन अब तक हमारे हो चुके हैं और हम तो पायनियर भी रहे। बीइंग अ विवारियन आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। मैं खुद, मेरा ताल्लुक जामनगर विवारिया मेमन जमात से है, सो बीइंग अ विवारियन आई एम वेरी प्राउड। और मेरे साथ प्रेसिडेंट ऑफ जामनगर विवारिया मेमन यूथ ऑर्गेनाइजेशन बैठे हैं, और वो जिस तरीके से ब्रीफ कर रहे हैं तो मुझे और ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। और जहाँ इतना बड़ा टूर्नामेंट MCCL सीजन 1 ये अच्छा रंगारंग तरीके से जारी है, तो मैं यहाँ पर इंटरप्ट मैंने ज़रूर किया था, लेकिन आप इसके बारे में ब्रीफ कीजिएगा कि WSL सीजन 12 का आपने जो एक छोटा सा ग्लिम्स दिया कि हम अनाउंस करने वाले हैं और लोगोस तैयार हो गए हैं, तो ये कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बैंगर आने वाला है? ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में जो है वो लॉन्च हो जाएगा। माशाल्लाह हमारी टीम्स वगैरह भी सब तकरीबन हो चुकी हैं, और बस थोड़ा सा जो है चीज़ें रह गई हैं, वो अभी पूरा कंप्लीट तो नहीं बता सकते, पर ये है कि इंशाल्लाह ताला वो नेक्स्ट वीक में हम लॉन्च कर देंगे WSL 12। अच्छा, स्पोर्ट्स के मुकाबलों के अलावा हमने ये देखा कि अब हमारे जमात जो है वो किरत और नात के मुकाबलों की तरफ, और फिर इसके बाद मज़ीद इसी तरीके के इवेंट्स जस्ट लाइक सलाम पाकिस्तान हमारा हुआ था, इस तरीके के मज़ीद इवेंट्स कितने सारे जो हैं अब आपकी पाइपलाइन में है और किस तरीके से आप इसको डिलीवर करेंगे? तकरीबन 8 से 9 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, जो एजुकेशन के हवाले से भी हैं और स्पोर्ट्स के हवाले से भी है, और कुछ हमारे बच्चों के लिए भी है कि हम बच्चों का, अभी कुछ लेडीज़ का भी आ रहा है कि लेडीज़ का भी कुछ प्रोग्राम करें, तो वो भी इंशाल्लाह ताला हमारे लाइनअप पे है। सारी चीज़ें हम अभी लॉन्च एक साथ तो नहीं करेंगे, फर्दन करेंगे, पर इंशाल्लाह ताला एनुअल प्रोग्राम है, एनुअल प्रोग्राम भी इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट ईयर में, हमारे पास है कि हम नेक्स्ट ईयर में कर देंगे। और जो सलाम पाकिस्तान की बात करी उसके लिए हमारी तकरीबन वर्किंग हो चुकी है, वो हमारा नेक्स्ट ईयर के अंदर इंशाल्लाह ताला फर्स्ट बड़ा प्रोग्राम होगा WSL के बाद, तो वो भी इंशाल्लाह ताला जल्दी लॉन्च कर देंगे। बस लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा, मिस्टर अब्दुल कादिर बारम्बिया, HH इम्पैक्ट्स, जिनकी वजह से आज MCCL सीज़न 1 जा रही है, आपकी तो डायरेक्ट उनसे मुलाकात रही है और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हमें सपोर्ट भी किया है, तो उनके लिए कुछ वर्ड्स और इसके बाद थोड़े से कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपकी तरफ से, फिर इसके बाद हम मैच की तरफ वापस से बढ़ेंगे। कादिर चाचा ने, हमारे मेरे चाचू हैं, सही है, तो वो माशाल्लाह हम जब उनके पास ये प्रोजेक्ट लेके गए, खैर पहले तो उन्होंने हमें कुछ बोला था कि कुछ ऐसी चीज़ करो
जिसमें सबका भला हो। तो फिर सनान भाई आए कि यार ये कराना है MCCL, तो हम मेरे कादिर भाई के पास इसका हम प्रपोजल लेके गए, जो उन्होंने, हम 3:01 पे उनके ऑफिस में एंटर हुए थे और 3:04 पे हम ये फाइनल कर चुके थे। उसके बाद हम 15 मिनट और बैठे जिसमें हमने चाय पी बस, और ये समझ ले कि हम 20 मिनट में उनके ऑफिस से बाहर थे। और उनका बहुत शुक्रिया अगर अदा करेंगे, अगर बहुत माशाल्लाह उन्होंने हमारे को अभी भी सीज़न 2 के लिए भी जो है वो उन्होंने, वो खुद इसके अंदर उत्साहित है कि भाई हम कब करा रहे हो लॉन्च, कब करा रहे हो, तो वो इंशाल्लाह ताला वो भी लॉन्च करेंगे। तो इस नेक्स्ट सीज़न में भी इंशाल्लाह ताला वही आपको नज़र आएंगे अल्लाह के हुक्म से। इसके अलावा हम लोग और फर्दर भी लेंगे। इस बार तो हमने एक ही उससे टाइटल लिया था, पर नेक्स्ट में हम जो है हमारे पास प्लेटिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है, इस तरह के हमारे स्पॉन्सर इंशाल्लाह ताला और भी हम ऐड करेंगे इसमें। वैसे बाइक भी अनाउंस कर दी है उन्होंने। हाँ, बाइक जो है उन्होंने बहुत हमें भी सरप्राइज कर दिया था। बहुत उन्होंने हमारे को आके बोला कि एक बाइक लॉन्च करनी है, और हम खुद सरप्राइज हो गए थे उस टाइम पे। जिस तरीके से प्लेयर्स हुए उससे ज़्यादा हम हुए थे कि बाइक बहुत बड़ी चीज़ होती है माशाल्लाह, और आपको पता है उसकी आजकल अमाउंट कितनी हो गई है। तो वो भी माशाल्लाह उनकी तरफ से जो है अल्लाह पाक उनको और बरकत दे। तो उनकी तरफ से जब ये लॉन्च हुई तो हम खुद भी शौक थे, और हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक उनको तरक्की दे, हमारे सारे स्पॉन्सर्स को तरक्की दे। तो उस लिहाज से जो है वो हमारे साथ जो सपोर्ट करते हैं और जो करना चाहते हैं, अल्लाह पाक जो है उन सब के साथ जो है वो ऐसा ही मामला रखे जिस तरीके से कादिर भाई हमारे साथ ज्वाइंट हुए हैं, और आगे भी और ज्वाइंट भी इंशाल्लाह ताला और भी लोग होते रहेंगे। Thank you so much. This was the president of Jamnagar Vivaria Memon Youth Organization, Mr. Uzair Munawar. और क्या ही कंक्लूडिंग अच्छे रिमार्क्स, दुआओं के साथ, दुआओं भरे अल्फाज। और यही एक लीडर की पहचान होती है कि जब आप हर किसी को साथ लेके चलें, एक भी नाम नहीं भूले, ये जिन्होंने पहले सर्व किया, जो अभी सर्व कर रहे हैं, और जिस तरीके से लेके चल रहे हैं, ये एक लीडर की ही पहचान होती है। और एक ये लीडर ही कर सकता है कि किसी नाम को भी इन्होंने फॉरगेट नहीं किया, और आगे जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया है उनका शुक्रिया भी अदा किया, और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। सो बैक टू द मैच। थैंक यू सो मच। Back to the match. Power play is over. 6 overs passed, 41 for the loss of 2 wickets. Boundary. 4. Usman Bhavani. What a hit by him. He's on 46 now. Well, the total score is 46. Usman Bhavani is on 11 in a dozen deliveries he has played. You were watching the chit-chat session with the president of Jamnagar Varia Memon Youth Organization. Okay, while I was introducing it, it went for a maximum. You saw it. That was a magnificent hit. First a boundary and then a maximum. Just swept. And that went all the way. 6 it is. So in this manner, the 50 up for TN Upleta Titans, 52 for the loss of 2 wickets after 6.3. 3 more deliveries to go. And Hanzala being a little expensive here in his 3 deliveries. He has conceded 15 runs and hadn't got any wicket here. Usman Bhavani now on 17 and 13 deliveries. Well, he's a player you can rely on. Excellent one. Very excellent. Excellent one, yeah. So dot delivery it was. Once again, a great comeback. So now 2 more deliveries to go. That became a little energetic. Okay, 2 steps ahead. Chance. And it has been referred to the third umpire. Finally, we'll review something now. Okay, so now we'll check it whether it was an out or not. You're waiting for the frame, and then we'll take some decisions here. Our third umpire is present with me. Took 2 steps ahead.
Okay, so he took 2 steps ahead and he swung the bat. That was into the keeper's hand. And we have to check it. His leg was in the crease. His leg was in the crease. And that's a not out. That's a not out. The decision has been made by the third umpire. That's a not out. Not out. One more delivery to go now. And that's up in the air. That's. Oh, taken. Taken. Well, the ball bumped out of his hands and then he grabbed it in the second try. That's the end of the 7th over with a big wicket in a style. Usman Bawani departed, bumped out of his hands and then he caught it once again. That's the end of the 7th. 52 for the loss of 3 wickets. That's a maximum. Just look at that. Perfect execution. And that went all the way. 6 it is. 58 now on the board. Well, 131 to win. Ajmal Siddiq. Here we go. Oh, nice one there, appealed, but no response by the umpire. And once again,
It was an appeal, but dot delivery. The umpire didn't respond on that one. TN and Upleta now in a very great condition, because 131 is the target. They were a little struggling in the beginning, but now they're going with a great pace here. Here we go. And blocked it towards the covers. Fielder there. Dot delivery. Ehsan bowling it now. Here we go. Left hand bowler. Oh, slower one appeal, but no response by the umpire there. And a very great decision by the umpire. End of the 8th, 58 for the loss of 3 wickets. .58 for 3 after 8. Now Hanzala is going to bowl it. Straight and straight to the fielder as well. Miraj, he's facing it. Here we go. And straight towards the square leg. Fielder there. Just a and a big hit here. That goes all the way. Oh, it was a gigantic one. Straight. That was out of the ground, and it was into. That was onto the roof of the house. Here we go. Straight to the fielder once again. That's a dot delivery. 65 for 3 after 8.4. Ajmal Siddiq smacks it once again. Boundary over. Ajmal is on fire. He's on fire. 28 off his bat in just 18 deliveries. Magnificent. Here we go. And played it towards the square leg. So single on the board.
End of the ninth. 70 for the loss of 3 wickets. Shahnawaz Ajmer Wala. He'll bowl the 10th over. 70 already on the board. 131 is the target. The required run rate is 5.55. 61 more needed in 66 deliveries, which is okay. White ball now. 60 more needed in 66 deliveries. Well, that's a score which is quite chaseable, and it will be very easy for TN and Upleta Titans, just the way Ajmal Siddiq and Miraj are on crease. Ajmal Siddiq now on 29 in 19 deliveries. Here we go. And very good delivery. Dot it is this time. 71 for the loss of 3 wickets after 9.1. Towards the point this time. Just a single. Well, the way they were accelerating, just like Ajmal did in the very last over, the flow is now a little broken. Shahnawaz is bowling really nice. 72 on the board. Miraj now is going to face. He has played 2 deliveries, scored a single. Well, he's a player. He has the class. He has the potential. And white ball, single by the umpire. Boundary. 4. And that was towards the backward point. Just a single there. 79 for the loss of 3 wickets after 9.5. One more delivery to go. Here we go. Smacks it down the ground. Just a single on the board. So that's the end of the 10th. 80 up. 80 for the loss of 3 wickets.
51 more needed in 60. And nicely played. Single on the board. 81 for the loss of 3 wickets after 10.1. 50 more needed now. 59 deliveries more needed. Upleta Titans, well, they are in a very great condition. And when you have players like Ajmal Siddiq and Miraj on the crease, well, Miraj has a very great track record. Similarly, Ajmal Siddiq also had it. Okay. That was played towards the square leg. Single on the board. They are not giving any loose chance here. .82 for the loss of 3 wickets. 10.2 was already delivered. 49 more needed. Oh, nice one there. Dot. Boundary. 4. Here we go. Oh, nicely played. Once again, found the gap there. Miraj now on the charge. Back-to-back boundaries. .90 up, 90 for 3 after 10.5. 41 more runs required in 55 deliveries. Current run rate of 8.31. The required run rate is 4.47.
Here we go. Played it towards the extra cover with single on the board. End of the 11th, 91 for the loss of 3 wickets. 40 more required in 54 balls now. Dot delivery. Shanawaz Jameerwala, he's bowling it. Bowling his second. Score now 91. 3 wickets down. Okay, that was a juicy full toss, but that wasn't played very nicely. Went to Haziq Sachwani. He was the fielder, the captain himself. Towards the covers this time. Fielder there at the deep. Taking a couple of runs. Oh, that is an overthrow. A costly one. Taking 3 runs on the board. 94 now. 94 for the loss of 3 wickets after 11.3. Up in the air, and dropped. Haziq was the fielder there. That was a drop. So 95 for 3 after 11.4. $95 for the loss of 3 wickets after 11.5. One more delivery to go. That will end the 12th. Okay, little turn, and once again a misfield, but that won't cost a lot. So just a single. 35 more needed in 48 deliveries. 96 for the loss of 3 wickets after 12.
99 for 3 after 12.3 now. Muzammil bowling it 3 singles in a row. 14 he has conceded, hasn't got any wicket. Ajmal Siddiq now on 34. He seems very confident, but it was a very good delivery. The bowler didn't give any room to the batsman. So 32 runs more required in 44 deliveries now. Required rate of 4.36. Oh, it was a chance. If it would have been turn, that would have been a wicket here. So 100 up. 100 up for TN and Upleta Titans. $31 more required in 43 now. 100 for 3 after 12.5. Here we go. Oh, little lick off the bat. Very lucky. Mirage with the boundary there towards the third man. Magnificent. Just look at that. So that's the end of the 13th. 104 for the loss of 3 wickets. Okay, so now once again we'll shift to Urdu. That means कि हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद है हमारी वर्किंग कमेटी MCCL सीजन 1 की. मैं काफ़ी दफ़ा नाम लेता रहा. सफ़ान समद लीड कर रहे होते हैं ये हमारे तमाम ही बच्चों को, और लड़कों को मैं कहूँगा, अब तो लड़के हो गए सारे, तो इंटरव्यू लेंगे सफ़ान समद का भी. इतने अच्छे तरीके से इतने स्मूथली लेके चल रहे हैं MCCL को. पीछे बैक पे तमाम ही काम कर रहे होते हैं, और ये तमाम जो वर्क है MC1 में, जिसकी वजह से MCCL सीजन 1 इतनी स्मूथली चल रहा है, और क्या अच्छा एनवायरनमेंट दिया हुआ है. ये मेहनत ये इन लड़कों की है. तो इसमें से एक हीरा हमारे साथ आज भी मौजूद है. सफ़ान, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह. सफ़ान, किस तरीके से लेके चल रहे हो MCCL सीजन 1 को, कैसे देखते हो, और इस टीम के साथ जो आपकी है किस तरीके से आप लीड कर रहे हो? सबसे पहले मैं शुक्रगुजार करूंगा हमारे HH इम्पैक्ट्स का, कादिर भाई का, जिन्होंने इतना बड़ा स्पॉन्सर दिया हमें. तो वो फिर उसके बाद जो है जामनगर वाली यूथ ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट उज़ैर मुनव्वर का, जिन्होंने हमें बिल्कुल फ्री हैंड बताया हुआ है कि इस तरह से काम करना है. मतलब पूरा सपोर्ट दिया पीछे से कि आपको अपनी तरफ से ग्राउंड में देखना है क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह से डील करना है सबको.
और फिर लड़के माशाल्लाह हमारे पास जो लड़के काम वर्किंग कमेटी में हमारे पास लड़के हैं, वो बिल्कुल स्मूथ तरीके से चल रहे हैं और कोई ज़रूरत मतलब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको इतना आइडिया है कि किस तरह काम करना है, किस तरह से हमें उसको टीम्स को लेके चलना है, किस तरह से पूरा ग्राउंड की सारी चीज़ों को मैनेज करना है। तो जो रील्स वाला बना रहे हैं वो उनको भी अब आइडिया हो चुका है किस तरह स्टार्टिंग में रील्स बनानी है, किस तरह से टीम जब एंटर हो रही है किस तरह रील्स बनानी है, तो माशाल्लाह वर्क बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अच्छा, अगर देखा जाए तो सिर्फ मीडिया के हवाले से नहीं, बल्कि मैं आपसे जामनगर विवारिया मेमन यूथ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बात करूंगा, क्योंकि हम सब जो है इस वक्त जामनगर विवारिया मेमन यूथ ऑर्गेनाइजेशन एंड जामनगर विवारिया मेमन जमात इनफैक्ट उनके अम्ब्रेला के अंडर हम काम कर रहे हैं। अभी हमारे साथ प्रेसिडेंट साहब भी मौजूद थे जामनगर विवारिया मेमन यूथ ऑर्गेनाइजेशन के, मिस्टर उज़ैर मुनव्वर। तो हम ये तमाम ही टीम हम काम कर रहे होते हैं, मैनेजिंग कमेटी जो है। अब आगे इवेंट्स, क्योंकि मैंने आपको देखा है जैसे अभी आपने बैडमिंटन टूर्नामेंट भी लीड किया था, तो इस तरीके से और कैसे टूर्नामेंट्स या और मजीद क्या एक्टिविटीज हैं जो आपकी पाइपलाइन में है? आप तो बहुत ही ज्यादा फ्रंट एंड पे रहते हैं इस मामले में, क्योंकि आप बैडमिंटन टूर्नामेंट के को चेयरमैन भी रहे थे गालिबन। बेसिकली को चेयरमैन था मैं बैडमिंटन टूर्नामेंट का, वो बहुत सक्सेसफुल इवेंट रहा हमारा। इस पे हमने सोचा ये है कि आगे भी इंशाल्लाह जल्द ही बैडमिंटन सीज़न 2 हम अनाउंस करने वाले हैं इसी वजह से। दूसरा बैक पे हमारा नाथ एंड किया कॉम्पिटिशन चल रहा है, तो वो भी इंशाल्लाह उसको कोशिश ये है कि उसको सक्सेसफुल बनाया जाए इस तरीके से। और जिस जहाँ तक बात है MCCL की, तो वो कोशिश ये है कि इस इवेंट को हम पूरा प्रॉपर बनाएं, इतना मतलब इसकी हाइप क्रिएट करें कि नेक्स्ट सीज़न में इंशाल्लाह हमारा अपडेट तो जहाँ तक मिले कि सारी टीम्स बुक हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। तो ये है कि तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए भी कि नई टीम्स आएंगी, नया पूरा नया वापस से सीजन 2 स्टार्ट होगा, इसमें मुख्तलिफ नई टीम्स होंगी, उनका भी मीटअप करने में बहुत मज़ा आता है। ग्राउंड में लड़के अच्छे हैं, ये बात बात करते हैं और ये वो होता है कि जमात में वो अनबन नहीं है, मिलजुल के सारे टूर्नामेंट्स को लेके चलते हैं और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जमात की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, जामनगर विवारिया मेमन जमात की तरफ से एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया है, जिसके ऊपर हम तो सब प्राउड है। बीइंग अ विवारियन मैं खुद भी प्राउड हूं, और यकीनन आप भी प्राउड होंगे इस पे, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से इस टूर्नामेंट को लेके चलना और फिर इसके बाद तमाम ही मेमन कम्युनिटी की टीम्स को साथ लेके चलना, और तमाम ही मेमन कम्युनिटी की टीम्स यहाँ पर आ रहे हैं, एक यकजहती का मुजाहरा है। और फिर इसके बाद एक प्लेटफॉर्म पे, एक पेज पे आके जब मेमन कम्युनिटी खड़ी हो जाए, तो लाजमी सी बात है वहाँ पर आप हॉस्पिटल्स भी देखते हैं, आप पढ़ाई के मौके भी देखते हैं, आप फलाही काम भी देखते हैं। तो ये तो मेमन कम्युनिटी का हमेशा से वतीरा ही रहा है। तो बस ये अब एक आखिरी सवाल मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ ग्राउंड में जो है हर वक्त एक्टिव होते हैं, आपको टाइम पे रिपोर्ट करना है, मैचेस टाइम पे स्टार्ट करवाने हैं, टीम्स को आपको मैनेज करना है, और फिर इतनी सर्दी का माहौल है। मैं खुद भी देखें अभी ये कैप पहन के बैठा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इतने सर्द माहौल में जहाँ पर आपकी थोड़ी सी तबीयत भी नासाज हो जाती है इतने सूखे मौसम में, वहाँ पर इतनी आला तरीके से आप ऑन फीट होते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा कि ये मोटिवेशन कैसे आई, और जामनगर विवारिया मेमन यूथ ऑर्गेनाइजेशन को जो आप सर्व कर रहे हैं उसकी मोटिवेशन कैसे आई आपको? लास्ट ईयर की बात है जब उमर दरवेश ने मुझे उसमें किया था। उमर दरवेश ने मुझे जो है इसमें अच्छा, ये मुझे अब खासा बड़ा आंसर नजर आ रहा है, माइक इन्होंने अपने हाथ ले लिया था। लास्ट ईयर की बात है जब उमर दरवेश साहब ने मुझे इसमें इन करवाया था। अच्छा, उनके अम्ब्रेला के अंदर मैंने उनकी जब वो जनरल सेक्रेटरी थे, एक्स जनरल सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने जब इन करवाया था तो उसके बाद मैंने काम वर्किंग किया था, सीखा था उनके बदौलत। तो अब ये भी है कि ये भी इवेंट हमारी जमात का ही है, जामनगर में जमात की ये पावर्ड बाय है। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इस इवेंट को भी इतना सक्सेसफुल बनाया जाए कि नेक्स्ट सीज़न भी इंशाल्लाह हम उसको प्रॉपर डील कर सकें। इस सीज़न में जो कमी कोताही यहाँ पे हुई है इस इवेंट के अंदर, उसको भी कवर अप करने की हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सफ़ान। सफ़ान हमारे साथ मौजूद रहे, और एक बार फिर हम मैच की जानिब वापस से बढ़ते हैं। 114 रन्स हो चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पे। 14.4 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ, 17 रन्स मजीद दरकार हैं। अब इस बार पॉइंट की जानिब खेला है, और गुड फील्ड, मतलब अब 16 रन्स दरकार हैं मजीद 32 गेंदों में।
उठा के खेला और taken gone. चौथी विकेट डाउन हुई। 15 ओवर्स का हुआ खेल मुकम्मल। 115 4 विकेट के नुकसान पे। अजमल सिद्दीक ही डिपार्टेड ऑन 43। बहुत ही अनलकी रहे, बड़ी विकेट डाउन हुई। Here we go into the 16th over. 16 more required. Back to the game. Dot it is 115 for the loss of 4 wickets. 16 and 29 deliveries. Here we go. And that was played towards the covers. Okay. Hasik once again. He was the fielder. Hamad Aslam bowling it. He's bowling his second over. 8 he has conceded. Here we go. Nicely played towards the point. Well, he was not able to maintain his balance, but still a very great throw towards the keeper. 15 more required. 27 deliveries to go. Oais Bojani. The new man in, and he'll face it. Okay. Nicely pushed it away. Well, it wasn't hit very hard. And it's becoming cold here in Rashid Latif Cricket Academy. You're watching MCCL, Memon Community Cricket League, Season 1, live from the YouTube channel of Jamnagar Waria Memon Youth Organization. And Jamnagar Waria Memon Jamaat and Youth Organization, in fact, and the YouTube channel of TNVisions. This tournament is presented by HH Impact's Mr. Abdul Qadir Barambia and powered by Jamnagar Vivaria Memon Jamaat and Youth Organization. Here we go. Towards the square leg. Just a single. 13 more required now. 12 more required, in fact. 119 for the loss of 4 wickets after 16.
So that was into the block hole with just a single. Here we go. And towards the covers this time once again. Fielder there. Just a single. 10 more required now. 121 for the loss of 4 wickets. Where's Bojani? He's going to face it. Here we go. Oh, that was towards the leg side of stump. Lil far. Just look at that. That was a big chance. A nightmare for the batsman. 10 more required in 21 now. Where's Bojani? He's going to face it. Here we go. Oh, he played it towards the fine leg. He tried it, but... oh, given! Gone! Always Bojani departs. 5th wicket down on 121. Always Bojani played 5 deliveries, scored 3 in it, and now he departed.
We are into the 18th. 7 more required. 124 for the loss of 5 wickets now. Here we go. Mirage facing it. Flight is slower. Pulled it towards the point. And threw at the wrong end. Mirage safe here. Just a single. 6 more required now. Six more required. Hamad, he's bowling it. 125 up, 125 for 5. Here we go. And nicely bowled there. Five more required. And towards the... Oh, dropped. Dropped. And it was a run out chance as well. Threw at the wrong end. 2 chances in this delivery and both of them were dropped. My God. Just look at that. In such crucial stage of the game, you cannot give an excuse for that. Single. 126 now. 127 in fact. So now just 4 more required. And that's the end of the match. 4. Waqas Memon. Magnificent. You beauty. Upleta Titans has won the match by 5 wickets, and we'll be back with the presentation in a bit. Upleta Titans has won.
जनरल ऑडियो में ही आ रही हेलो 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 अब आइए वेट करिएगा अब आइए जी चेक कराएं सही ओके परफेक्ट है आ गई ओके ओके अदील भाई वाली गाली लिखते कि बता देना उसको है हाँ लेकिन उसको बता देना ना ऐसे ना लपेट ले वो तुम्हें पता तो है हम रेडी हैं क्या? जी हम रेडी हैं ये लोग वेट कर रहे हैं क्या किसी का ये वेट कर रहे हैं हैं यस क्यों Okay, so Bismillah Rahman Rahim. We are here with the presentation of the another match which was played between Cutchi Memon Champs and Upleta Titans. And today the day was in favor of Upleta Titans and they have won the match by 5 wickets. So big round of applause for Upleta Titans. And first of all, I'd like to call the captain of Cutchi Memon Champs, Mr. Haziq Sachwani, to please come forward, and I'll call our guest as well, Mr. Uzair Munawar, the president of Jamnagar Vivaria Memon Youth Organization. Then Faik Imran will join us, and Anas Majid will join us as well. हाजिक भाई थोड़ा सा अभी आएंगे. हाजिक भाई बैड लग रहा आज, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट सा मैच था और शुरू से ही देखा जाए तो आप रिदम नहीं ग्रैब कर पाए उस तरह. हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुरू में हम पहले तो बैटिंग में 15 से 20 रन शॉर्ट हो गए, लेकिन फिर बॉलिंग में रिदम पकड़ा, लेकिन उसके बाद वो 2-3 मिसफील्ड्स ने उनको हावी कर दिया और फिर अजमल भाई ने जो आके स्टार्ट लिया उससे हम थोड़ा वो हो गए थे. लेकिन अगर देखा जाए तो आपकी साइड से भी अब्दुल्ला याकूब ने जिस तरीके से गेम को आगे लेके चले और वहाँ पर थोड़ी सी लैकिंग नज़र आई कि क्रीज पे स्टैंड नहीं कर पा रहे थे बैट्समैन, वो एक साथ नहीं दे पा रहे थे अब्दुल्ला याकूब का जिस तरीके से उन्होंने एक इनिंग्स खेली. बिल्कुल स्टार्ट में हमारी विकेट्स गिरी, लेकिन अब्दुल्ला भाई और क्रामा भाई ने एक पार्टनरशिप बिल्ड की जिसकी हमें ज़रूरत थी, लेकिन जब एक और विकेट गिरी फिर हम स्टैंड नहीं कर पाए, पार्टनरशिप बिल्ड नहीं हुई, जिसकी वजह से हम 15 से 20 रन शॉर्ट थे. ठंड का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट था, क्योंकि आज ग्रेजुअली 2-4 दिन से देखा जा रहा है कि ठंड बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है प्लेयर्स को. फील्डर्स पे बहुत प्रेशर होता है, हर कोई कोशिश कर रहा था मेरे पास बॉल ना है बस, ताकि मैं बचा रहा हूँ. Okay, thank you so much, Haziq bhai, and big round of applause. He was the captain of Cutchi Memon Champs, and now the winning captain, Mr. Tala Shabir, will join us here. The winning captain, the captain of Upleta Titans. Tala bhai, first of all, congratulations, bada game and victory from 5 wickets. थैंक यू सो मच. लास्ट मैच हम बहुत क्लोज आए थे बट जीत नहीं सके थे, आज कॉम्प्रहेंसिव विन हुई है तो यस थैंक यू. वैसे अगर देखा जाए तो आज भी थोड़े से कैचेस ड्रॉप ज़रूर नज़र आए, वरना ये मैच थोड़ा सा अर्ली फिनिश हो जाता. फास्ट बॉलर्स ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया और हमने अर्ली विकेट्स लिए, उसके बाद उनकी पार्टनरशिप जो बन रही थी, अक्सर मैचेस में हमने यही किया है कि मोमेंटम आके फिर लूज़ किया है, तो उस वक्त वही सिचुएशन थी, बट एक विकेट मिली और अच्छा हमने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की. आखिरी में 20 रन हमने भी दे दिए एक्स्ट्रा, वरना हम उनको 120 के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर लेते. और पिच किस तरीके से रिस्पॉन्ड करी थी, क्योंकि आज मैंने देखा कि बैटिंग पिच इस तरीके से नहीं थी, बॉलर्स स्पिनर्स ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे और ऑब्वियसली आपने भी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट किया आज. तो हमें एडवांटेज हुआ, टॉस जीते, फील्डिंग की, पिच थोड़ा सा गीला था जिसकी वजह से थोड़ा फंस रहा था, तो अर्ली ऑन फास्ट बॉलर्स ने अच्छा एडवांटेज लिया और बाद में स्पिनर्स के लिए तो ओवरऑल मैच में सपोर्ट था, अच्छी जगह से बॉल ब्रेक भी हो रहा था, तो ये लो स्कोरिंग मैच था और ग्लैड कि हम फिनिशिंग नोट पे अच्छे विनिंग नोट पे फिनिश किया. अजमल ने बहुत अच्छी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दी, बाकी सब ने भी कंट्रीब्यूट किया, बट अजमल का आज अर्ली ऑन बैटिंग कराना, वरना वो बहुत लो डाउन बैटिंग करते, तो ये हमारे लिए बड़ा अच्छा साबित हुआ.
लगता है मतलब आपको एक और नया की प्लेयर आज मिल गया, नई डिस्कवरी हुई आज आपके लिए। नई डिस्कवरी एक्चुअली पिछले दिनों किसी ने मुझे बताया अजमल ओपन करता है, तो मैंने उससे पूछा आज मैच से पहले कि ओपन करते हो, कहता है हाँ मैं हर जगह ओपन करता हूँ, तो मैंने उसको चांस लिया कि चले उसको जल्दी भेज दें। बिल्कुल, आज उसने ओपन तो नहीं लेकिन आपका अकाउंट जरूर ओपन कर दिया एमसीसीएल सीजन 1 के अंदर विक्ट्री का। बिल्कुल, बहुत खुशी है इस बात की और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी अच्छे परफॉर्म करके मैचेस जीतेंगे इंशाल्लाह। Thank you so much. Thank you, Talabhai. And this was the winning captain of TNN Upleta Titans. Now the time for some awards. The first award is the Star Player of the Match. That was a little unfortunate for Cutchi Memon Champs, but he was the man. He has scored the half century today. It's none other than Abdullah Yaqub. चार्जर एक्स्ट्रा नहीं लेना। And now the next award is the game changer. The man who has turned it. That is none other than Sami Aslam, all the way. And he's very happy. He's very happy. All 32 teeth I can see clearly. Some photo session going on right now. Okay, so now the big award. The man of the match, the player of the match, none other than, well, he was praised by his captain as well. That's Ajmal Siddiq today. अजमल, फोटो सेशन के बाद आपसे छोटी सी गुफ्तगू भी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, बड़ा गेम रहा। पहली जो है आपकी विक्ट्री भी आपने स्कोर की, और जहां जैसे आपने आपके कैप्टन ने बोला कि आप ओपन करते हैं, लेकिन आपने तो आज अकाउंट ही ओपन कर दिया। बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा है कि अपॉर्चुनिटी मिली, ऊपर कैप्टन ने कॉन्फिडेंस दिया तो जो उसको अपॉर्चुनिटी को अवेल किया और स्कोर करके दिया टीम के लिए। वैसे आज बॉल जो है वो बैट पे इस तरीके से क्लिक नहीं कर पा रहा था, बॉल को कनेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, और देन जो फील्ड साइड थी वो थोड़ी सी टाइट भी रही, और वहाँ पर इतने अच्छे से स्कोर कर लेना, कैसे आपने इसको मैनेज किया? स्पिनर के लिए थोड़ा अच्छा विकेट था, जो बॉल में स्विंग भी था और थोड़ा सा जो है लोअर की तरफ रह रहा था, तो थोड़ा सा मुश्किल था क्लिक करना। वैसे अगर देखा जाए 5 विकेटों से ये विक्ट्री, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली जब आपकी विक्ट्री भी हो जाए तो आपने थोड़ा सा अपनी मिस्टेक्स को भी ओवरकम करना होता है ताकि और मज़ीद अच्छे तरीके से इसमें विक्ट्रीज हासिल की जाएं। बस अल्लाह का शुक्र है कि इस टूर्नामेंट में एक कमबैक मिला है। पहला तो हम हार गए थे, सेकंड में विन मिला है, तो इंशाल्लाह ताला अच्छा कमबैक होगा और आगे भी अच्छा खेलेंगे। वैसे क्लोज रहा था ये गेम। अब थोड़ा सा मैं ये आखिरी क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा MCCL सीज़न 1 के बारे में, कि MCCL सीज़न 1 को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये आप आज मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं और आपके रिव्यूज़ इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है यंगस्टर प्लेयर्स के लिए, जो ऐसी जमातें जो बड़े टूर्नामेंट में नहीं करती पार्टिसिपेट, तो उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और यंगस्टर प्लेयर के लिए। Thank you so much. Thank you so much to our guests as well. Thank you so much. So this was it from the presentation, and we'll be meeting you tomorrow from Naya Nazmabad Cricket Ground. The match will be played between Memon 11 and Jamnagar Vivaria Memon Youth Organization, the Jamnagar Vivaria Memon Jamaat. That's the Titan 1. Jamnagar Vivaria Titan 1. So we'll be meeting you tomorrow. Till then, thank you. Meet you in Naya Nazmabad. पैकअप दिल भाई, पैकअप।